हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। दिस लुक इज स्पेशली फॉर ओनम। ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल से मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। And yeah, if you are new here, my name is Debalina and I am a professional makeup artist. So let's get started to the video. I'm going to use the Mama Earth Aloe Turmeric Gel. This aloe vera gel is so good. I already applied toner on my face. अब मैं इस एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लूँगी. It's really a hydrating. It's so hydrating. I love this aloe vera gel. आज मैं पहले मेरे आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी. यू कैन सी आई ऑलरेडी डिड माई आईब्रो. सो फॉर आई शैडो मैं पहले एक कंसीलर को मेरे लिड पर अप्लाई कर लूँगी. इससे मैं आज आई बेस क्रिएट करूँगी. दिस इज मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड सैंड. फिर मैं इसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी. अब आज मैं इस आई शेडो पैलेट की यूज़ करने वाली हूँ. आई बॉट दिस फ्रॉम ए लोकल मार्केट. सो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज नहीं दे पाऊँगी. इस आई शेडो पैलेट में जो ये वाइट शेड है, इससे आज मैं मेरे आई बेस को सेट कर लूँगी. एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैं मेरी जो आई बेस है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी. इस कलर को लूँगी एंड इसको डायरेक्ट मेरी लिड पर अप्लाई कर लूँगी. मैं जस्ट इसको डैब 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 करके मेरी लिड पर इसको अप्लाई करूँगी. मैं पहले इसको ब्लेंड नहीं करूँगी. मैं पहले इसको जस्ट ऐसे डैब डैब करके इसको अप्लाई कर लूँगी. अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी. मैं इस कलर को लूँगी एंड इस कलर को मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी. अब मैं इस कलर को लूँगी. फिर इसको क्रीज पर फिर से अप्लाई कर लूँगी. डार्केस्ट ब्राउन कलर, इसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी. मैं इसको अपनी लिड पर अप्लाई करूँगी. मैं फिंगर की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ. And then I am going to apply this light color. इससे मैं मेरी क्रीज एंड ब्राउन में जो कलर है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. शिमर कलर यूज़ करूँगी. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कलर. ओके, मैं इसको फिंगर की मदद से मेरी लिड पर अप्लाई कर लूँगी. करूँगी. दिस इज PAC 2-way जेल. मैं इसको थोड़ा सा मेरी लिड पर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा. देन फिंगर से इसको स्प्रेड कर लूँगी.
Now I am taking this shimmer dust and मैं इसको अप्लाई कर लूँगी मेरी जस्ट लिड के सेंटर पे. Now I am using this MAC strobe cream in the shade, there is no shade name, this is MAC strobe cream mini. मैं इसको आज फाउंडेशन के पहले अप्लाई कर लूँगी. इससे क्या होगी, मेरी फेस बहुत हाइड्रेटिंग लगेगी देखने में. एंड ये क्या करती है, फेस में एक इंस्टेंट सा ग्लो दे देती है जो मेकअप करने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है देखने में. आई एम यूजिंग Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation and my shade is 120 Classic Ivory. Okay, I'm taking first one pump of foundation, then I'm going to apply it on my face. Now I am taking this damn beauty blender and मैं फाउंडेशन को इसकी मदद से ब्लेंड कर लूँगी. For concealer I am using Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. मैं इसको मेरी अंडर आई पे अप्लाई कर लूँगी. देन ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड बो एंड चिन. देन आई एम टेकिंग दिस सेम डैम्प स्पंज जिससे मैं मेरी फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड की थी, उससे ही मैं ये कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी. You can see my concealer is nicely blended. Now I am going to contour my face. आज मैं पहले मैं फेस को क्रीम कंटोर करूँगी. For that I am using this Makeup Studio Face It Foundation in the shade Oriental Extra. ओके, मैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से इस फाउंडेशन को लूँगी एंड इससे मैं आज मेरी फेस को क्रीम कंटोर कर लूँगी. दिस इज़ अ वेरी लाइट कंटोर कलर. इससे बहुत ही नेचुरल लगेगी मेरी कंटोर देखने में. Now I am going to set my whole face with MAC NC15. Blush palette, Makeup Revolution blush palette. I am using this and this color. First I am taking this and this and smile and apply.
For eyeliner and kajal, I'm using this Maybelline Eye Studio gel liner. दिस पेंसिल ब्रश एंड इससे मैं मेरी लोअर लैश की जो काजल है इसको स्मच कर लूँगी. I'm taking this shade अप्लाई कर लूँगी. Smoky effect. And yeah, you can clearly see the difference. This two color from Swiss Beauty highlighter and bronzer palette. इससे मैं फेस को ब्रॉन्ज कर लूँगी. Shade as a highlighter. I'm using this shade on my face, on the highest point of my face. Forehead. Cheekbone. And chin. And cupid bow. एंड मैं नोज पे से अप्लाई कर लूँगी. इससे पिगमेंटेशन बहुत अच्छी मिलती है एंड इट लुक्स सो गुड. I'm going to apply the shade on my inner corner and brow bone. Now it's time for setting spray. For setting spray, I'm using this NYX Dewy setting spray. And for lips, first I'm using this cute little mini lipstick from Sugar. Oh my god, where is the shade name? Okay, मैं इसके शेड फाइंड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूँगी. यू कैन इजीली चेक दैट. मैं फर्स्ट इस लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी. For the nude shade, I am using this O3 Plus lipstick in the shade Blush Pink number 15. So hope you all enjoyed watching this video, and this is the final look. I applied falsies and mascara off camera, and I applied a concealer for this bindi, and I made by myself these jewelries. And आप लोगों को ये लुक कैसे लगे प्लीज़ मेरी कमेंट में मुझको बोलिए. अच्छा लगे तो भी बोलिए, बुरा लगे तो भी बोलिए. एंड मैं नेक्स्ट कैसे वीडियो लाऊँ उसके भी सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बोल के जाइए. एंड आज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ की हूँ सारे की लिंक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. And as you all know guys, I am a professional makeup artist and I lived in Vadodara. If any of you want to book me for your special day or your bridal makeup or any kind of party makeup, you can contact me. मेरी description box पे मेरी सारे contact details है, you can check that.
So, and please don't forget to like, comment and subscribe to my channel, and please hit the notification bell कि चाहे मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए. So yeah, bye, love you all.